Second thing is, friends, the best way of living life is only spirituality in all its aspects. Third thing is, who will guide us in spirituality is nothing but Shastra, nothing but Guru, nothing but God. These are all the things which we do, study every day, listen every day. But what funny thing which we have to understand is Shastras won't live our life. Guru doesn't live our life. The Lord doesn't live life ours. Our life we live. And they only supply us with data, guidance, blessing. But it is we have to make it for ourselves. So as long as the Daiva Upasana, Guru Upasana, Shastra Jnana remains objective, we don't take it as subjectively. Mm. And accordingly, totally metamorphosize ourselves. Slowly, steadily, there is no difference between us, the students of the Shastras, and so called spiritual seekers, and the people of the world. No difference at all. It is I who have to totally transform my own self. For that, what's required is, as we used to speak this a lot in the initial days of our classes, 3 4 years back. What is that? Have we taken our life into our hands, or still we have put it in the hands of the bhagya, you know, the fortunes, in the hands of the others, including Guru and God, on the name of the surrender, being irresponsible for our own life. The funniest thing is what? More and more we think we are doing great thing by doing the surrender on the name of surrendering words. Funny thing is, from the other side, to whom we surrender, Guru, God, and Shastra. And what they are telling, you do this, you do this, you do this. They consider and say that our advice to you to do this is our blessings. And we think that by doing nothing, saying I am surrendering to you is sadhana. You understood the paradox in that? हम क्या चाहते हैं गुरुओं से भगवान से अनुग्रह. They are giving anugrah in what form? In the form of knowledge. And what we have to do? Take that knowledge and practice it. That is the meaning of receiving their grace. Instead of that, on the name of devotion or surrender, if we don't take charge of our life and every aspect of life and thoroughly understand, investigate, and bring the required total metamorphosis changes and put it in perfect right direction, it won't happen. Everywhere, no, like you have a car. It is you have to drive it properly, manage it properly, and all. Whenever any problem is beyond your hand, then you go to the garage. हाउस आल्सो. सारे हमारे जीवन के हर एक चीज़ को हमको खुद अपने उपयोगी वाले हैं, तो हमें उनको मैनेज करेंगे ना. In the same way, it is my life. Yes, God is there, Guru is, Shastra are there. They are all helping. They are helping, but we are not receiving the help. And their help was never, "Ki you do nothing, that we do everything for you." As I thought, why will they do it only for us, the more laziest fellows? They'll do it for everyone, no? So the question that, am I improving or not? If not, why? If I have to improve, then what to do? Where I have to take initiatives? Where are the transformations I have to bring out in my entire lifestyle and all? This is for that बैठना पड़ता है, एक किताब पेन लेना पड़ता है, फिर पूरा लिखना पड़ता है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं अपन. नॉट द डायरी एंड आर बोले बिसरे गीत, जब मैं छोटा लड़का था, वो नहीं होना, लाइक दैट्स, है ना. नॉट योर ऑटोबायोग्राफी ऑफ इस ऑटो में मैं जन्म लिया, उस ऑटो में कॉलेज स्कूल जाता था, इस अभी नौकरी में ये ऑटो चला रहा हूँ. नॉट दैट ऑटोबायोग्राफी राइटिंग अबाउट ऑटो लाइफ.
No, and I do nothing because everything is automated at home, and people know that I'm such a useless fellow. Therefore, for my sake, they automatically do everything. Not that automatic. What has happened? What's happening to my body, to my mind, to my thoughts, to the knowledge? What knowledge I'm holding on to? Has this spiritual knowledge entered or still it's crashing at the gate? अंदर गया क्या? पिछले 4 साल से 5,000 क्लास हमने सुना, वो बाहर ही लटक रहा है. Like that rescue operation, they're all outside only, not going in. Think about it. Unless this way, na, thoda sa, coming out of the slumber and laziness of irresponsibility, taking charge and, and learn from the 100% worldly people. They are their only problem is worldliness. Other than that, they are masters of the life. They are the hard workers. They are the task masters, and they do the things so beautifully. Every of the professional. I am spiritual. This is the only good noble thought. Other than that, whole life is lazy, lethargic, irresponsible. No initiative, no joy, no stamina, none of that. The face may glow. कुछ नहीं है ना. जिस सिनेमा में कहते हैं ना, तुम हमारे कुटुंब के लिए कलंक वगैरह हो, मेरे को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं तो कलंक ही हूँ, कुछ कर ही नहीं रहे. भारत माँ के नाम निशान के लिए तुम्हें कलंक हो. दैट कलंक वर्ड इज यूज्ड, हमारे कुल का तुम कलंक हो, हमारे ऑफिस का तुम कलंक हो. तो मैं तो कहता हूँ मैं आध्यात्मिक के कलंक है. कुछ ओनली थियरी एंड नथिंग टेकन इनिशिएटिव. What is the extra thing we have taken up as sadhana? Consistently, what is the thing we gave up in our life? कौन से इंद्रिय भोगों को छोड़ा? बताओ, कौन सा योगादियों को किया? Then how the transformation will happen? ये ऑटोमेटिक थोड़ी है वो. इसलिए गुरुजन भी ऐसे इंतजार कर रहे हैं. ये तो इतना लेजी है, ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअल और भी इरेस्पॉन्सिबल लेजी बन रहा है. एग्जाम्पल इज अगेन our गुरुदेव. What a dynamism, what an aggressiveness in everything he was doing. All that shows he was taking initiative. He was taking upon himself. He was not waiting for anyone. ये देखकर ही जो नास्तिक लोग जान करेक्ट कहते हैं आस्तिकों को कि ऑन द नेम ऑफ आस्तिकता वी बिकम लेजी, irresponsible. Just like Vivekananda Adi कहते, it is better to play football on the ground rather than on the name of spirituality becoming lazy, lethargic, body oriented. We have to balance in life. Just art it is. Once in a while, pause and see what has to happen. Is it exactly happening? कभी क्या होता है ना, जो परसों कर रहे थे हम 4 दिन पहले, even listening to Shastra becomes such a routine, mechanical thing and addiction. इतना एडिक्शन कि आज क्लास नहीं है, फिर नींद कैसे जाए? आज क्लास नहीं है, फिर 1 घंटा बेचैनी होती है. नॉट दैट क्लास से कुछ सीख रहे हैं. एडिक्शन मेरे को होती है वो. इसी डर के मारे मैं छोड़ता नहीं. The other day I saw, 2 days I gave afternoon class break. I was not well at all. 105/4 चल रहा था, फिर भी बेचैनी हो रही थी. That was an addiction, but कोई फायदा. ड्रग एडिक्ट, सत्संग एडिक्ट, प्रोफेशनल सत्संगी कहते हैं उनको. हाँ, हाँ, it won't change. Therefore, not coming to the classes if is one disease, only coming and doing nothing is bigger disease, problem. So we have to negotiate through all this, take life into our hands, and then fully sit down, note down what exactly is happening, everything, and then what has to happen. I always see that with wonderment, na, all these 3 coaches क्रिकेट में ऐसे बैठकर घूर घूर के देखते रहते हैं. घूर घूर के मीन्स नॉट विथ फुल इंटेंशन द होल मैच. द बैटिंग कोच द अपोनेंट बैटर्स का सब लिख लेता है. हाउ दे आर स्टैंडिंग फॉर स्पिन, दैट दिस. फिर अपने बैट्समैन क्या कर रहे हैं, अपने जिनके ये कोच है, जैसा सिखाया वैसे कर रहे हैं कि नहीं.
वी टोल्ड फर्स्ट 10 ओवर्स इधर खड़े रहो, 10 इधर खड़े रहो, तुम्हारा स्ट्रेंथ इधर है, वीकनेस इधर है, तुम इस पॉइंट पे वीक हो तो तुमको ऐसे बॉलिंग करेंगे उसको। तो एवरी पॉइंट दे स्क्रूटिनाइज, दे राइट इट लगातार, जैसे गणपति ने महाभारत लिखा ऐसे लिखते रहते हो लोग, एक एक बॉल पे। सो टू द बॉलिंग कोच, जैसे जिसको कोच कर रहे हैं, स्विंग ठीक है, प्रॉपरली रन अप लिया कि नहीं, एनर्जी कितना है, स्पीड कितना मेंटेन कर रहा है, वाइड कितना डाला, बाउंसर कितना डाला, यार कितना किया, शॉर्ट बॉल कितने डाली है जिसमें 4 6 लगे, ही नोट्स डाउन ऑल ऑफ दैट। देन द फील्डिंग कोच, he looks at everyone कि how the fielding going on, डाइव कर रहे कि नहीं। देयर वाज नो डाइविंग इन 20 years बैक, बस देखते थे बाल, जाओ तो बाद में लेता हूँ तुमको। नाउ नो, 3 4 मीटर पहले जी दे ड्राइव, इवन गर्ल्स व्हेन दे प्ले क्रिकेट एंड ऑल, बाप रे। सो द फील्डिंग कोच नोट्स ऑल ऑफ दैट, अपने भी दूसरों का भी, फिर देन व्हाट एक्शन टू बी टेकन, दैट इज डन। So I'm telling of our life also, everything we cannot leave anything unattended, unaccounted। कितना भी, कितना पानी पी रहा हूँ, कितने रोटी खा रहा हूँ, कितना सब्जी खा रहा हूँ, उसका पेट में असर क्या हो रहा है, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स whom are the people I am meeting, what attitudes I am having, what topic I am discussing, how much of it is worthy। Oh, this introspection, if it is not done, we can never diagnose both what is wrong going on, what is right has to happen. The true diagnosis, na? The symptom and disease. And the other side, what is the correct treatment for it? He also thinks the doctor, oh yeah. So this is the infection, this is the season, these are the bacterial, viral fevers are going on. Therefore, these are children, therefore this is the dosage. Middle age is it. So he is just doing the other thing also, research of what to prescribe. He sees all parameters, temperature parameter, BP parameter, weakness parameter, the number of days, 4 दिन लीजिए या 6 दिन लीजिए या 10 लीजिए। Isn't it? In the same way, our life has to be fully, ऐसे परिश्रम कर रहा है, like a laborer। वो करता है सिर्फ वो ईंट पत्थर उठा के सुबह से शाम तक, हमको ये सारे चीजों का बोझ उठाना है। Then only we'll grow in life. Like that 1 hour thoroughly exercise doing person under the guidance, the remaining 23 hours is healthy। 1 hour properly puja करने वाला, 23 hours is in devotional mood, 1 hour meditating person in that calm sober mind throughout the day। In that way our life has to become master, we have to master our life। there is a मजा है। Listening to Shastra is a very essential, very necessary topic, but only first step, and it has to continue, of course। Maybe all that may be properly equipped with all these understandings and become practical too, not to prove to anyone anything. It's for us only, taking this as challenge and doing so, and proving to ourselves that yes, we also can be practical sadhakas and we can also grow। हाँ, किसी को अभी बहुत झुक चुके हैं, लोगों को नमस्कार किए, किसी को करना नहीं रहा, हो गया। आई माई सेल्फ एम साधक, आई डू माई, नॉट एन एरोगेंस बट सेल्फ रेस्पेक्ट। What is less in you? Who is the one in your whole state, whichever you are in, greater than you, is listening thousands of classes from last 4 5 years? Nobody is there as great as you. You are the best. You should be given Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and Bharat Ratan. But make it you count, make it practical. That's what is the urge here। अर्जी लगा रहे हैं आपके सामने। आप नहीं लिए भी, मैं तो मेरे लिए कह रहा हूँ ऐसे एक्चुअली। मैं तो जल्द से जल्द तो सत्वगुण को पाकर रज तमस को छोड़, ये सारा झंझट सत्संग वाला छोड़कर, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई आते नहीं, लेकिन आई टॉक टू यू ओनली 2 3। अच्छा है, दैट इज इनफ फॉर मी फॉर दैट मैटर। देन गो एंड जस्ट मर्ज, इजंट इट? मर्जी से उसमें मर्ज होना चाहिए, है ना? अर्ज हमारा होना है अंदर, और भगवान के सामने भी वो अर्जी पत्र रखना है। अर्जी पत्र इज एप्लीकेशन। Anyways, so this is how we have to just see the transformation। Om, Om, Om
ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या भक्तिदेव विद्या धर्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो मध्यो नमो गुरुभ्यः ब्रह्मणे श्रुतिमात्रे संस्कृत ब्रह्मविद्या भक्तिविद्या योगविद्या धर्मविद्याचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो नमः ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः ओम श्री वामेश्वराभ्यां नमः ओम श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः ओम श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः ओम श्री वेदव्यास महर्षि नमः समस्त रामचंद्र स्वामिनः भक्तेभ्यो रामायणाचार्येभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्य बोध पुराणे इतिहासोक्त भगवद् भागवत दर्शनानुग्रहण प्राप्ति सनातन धर्म से वैदिक हिंदू संस्कृते शास्त्राणां साम्प्रदायानां साधनानां भक्तानां योगानां गुरु शिष्य भक्त भगवत परंपरायाः पुनरुत्थान जागरण समस्त विषयाप्ति अध्यात्मिक प्रगति विश्व शांति विश्व कल्याण विश्व एकता विश्व पुरोगत्यर्थम अस्मिन् धर्म संस्थापन कार्य निष्ठे अस्माकं सह समस्त आचार्याणां गुरूणां भक्तानां शिष्याणां सेवकानां संस्थानां च पुनरुत्थान जागरण समस्त शक्ति साधना संपदा सानुकूलता प्राप्ति आयु आरोग्य ऐश्वर्य क्षेम स्थैर्य धैर्य प्राप्ति द्वारा धर्म संस्थापन कार्य दिग्विजयार्थम श्री ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्र से पारायणम अध्ययनम श्री आंजनेय स्वामिनः सहस्रनामावल्याः पारायणम अंतिम दिवसस्य अतिमुख्येन रुभुगीता शिवरहस्यस्यापि द्वितीयोऽध्यायस्य पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे आदौ श्री रामनाम संकीर्तनम् ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम ओम नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गमनेभ्यः ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम उत्तरकांडम पंचम सर्गः श्री रामगीता श्री महादेव उवाच श्रीराम उवाच let us chant the last three mantras 60 61 ओम भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जगत् मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा मद्भावना भावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्दमयो निरामयः यः सेवते मामगुणं गुणात् परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोऽहं स्वपादाञ्चित रेणुभिः स्पृशन् पुनातिलोकत्रितयं यथा रविः विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतं यः श्रद्धया परिपठेत् गुरुभक्तियुक्तः मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः इति श्रीमद् अध्यात्मरामायणान्तर्गत उमामहेश्वर संवादे रामगीता नाम उत्तरकाण्डान्तर्गत पंचमः सर्गः समाप्तः ओम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीव्यास शरणं मम श्रीव्यास शरणं मम श्रीसद्गुरु शरणं मम श्रीराम शरणं मम शरणं मम शरणं मम ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः अथ श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण पंचम सर्गः उत्तरकांडः रामगीता friends these shlokas just browsing through the literal meaning one can move ahead also mediocre way giving time pausing using the intellect trying to go deeper in the understanding also at the third highest level is taking a commitment of thoroughly practicing all the knowledge that is given here understood by us also. So we were doing the second one of trying to understand the entire thing. That's why this fifth sarga Rama Gita took 48 days for us. Today is 48वां दिन. 2 दिन में 50 हो जाएगा. So we have somehow come up to the last 2-3 shlokas. तो we'll try to see अगर हो गया तो आज हो गया नहीं तो कल भी थोड़ा देखेंगे नहीं तो कल सिर्फ पाठ करेंगे. Now I am doing the 60th again. In this again
Dukkha nivrutti, sukha prapti sadhana, which is a goal of every jiva, is hinted here. For other jivas, Bhagavan only through Prakriti he maintains them somehow. But Manushya ko he gave the Purushartha Samarthya by which he can reduce dukkha or increase dukkha. He can reduce happiness or increase happiness. So here the subtle techniques means the sadhana is hinted. Spirituality is the only way for dukkha nivritti, sukha prapti. So each word, each hint or each instruction given here is the worth millions of rupees. Not you can't calculate with the money. Means whenever you use the word money means as we value the money for the bhautika vishayas, so much is valuable the sadhana for adhyatmikata. That way it should be grasped. So first, brataha, my dear brother, yadi idam paridrushyate jagat. This whole jagat which is so conspicuously, clearly seen by you and experienced by you, that all is Maya eva, sarvam. All is Maya. Maya is what is there is not seen, what is not there is seen. Moha and Maya. We have discussed Maya means the three things are the power of non-apprehension, then power of projection and power of superimposition. है ना आवरण विक्षेप and aropana. The pure Brahman is hidden, Maya ka Shakti. Then the never existing unreal, like the Alata, the world of names and form is projected and given it the reality. That is called as the third level of Aropana, superimposition. See the power of Maya eva. That's why on the highest Vedantic scrutinization, you will find no world at all. Only Parabrahma. Highest Vedantic inquiries, like highest Bhautika Shastra inquiry level, whole gross world is nothing but atoms. But we laugh at zero physics knowledge level. हम कहते हैं कि ये सारा ये दीवार एटम है तल तल क्या सब कुछ एटम है तो व्हाट आर यू टॉकिंग वी डोंट सो दिस पर्सन्स दृष्टि इज नॉट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू दैट साइंस ऑफ फिजिक्स chemist says some chemical combination but they have discovered atoms, even not only atom. Within the atom, there are things within the atom. Now, if you look from that standpoint, what do you understand the Srishti as? Even though to the eyes the world is seen the same, because eyes show that way only the way to which they are habituated, the way in which they are trained. Tomorrow we'll see this in one of the classes. Not Mandukya, kahin bhi. But that physicist with his intellectual knowledge came to know. Now he says ki the whole world, how much ever gross it looks like, but basically it is atoms, it is some atomic particles. May say it's energy in motion. Then they have gone to the next level now. The science uses this word energy consciousness. यहाँ तक पहुंच गए लोग. The pure spiritual seekers have already discovered it is a pure conscious existence only, which objectified starts gaining the matterness. That matterness from the subtlest to slowly to the grossest, it gets transmuted for the sake of Vyavahara, which we see in the world in front. So as a physicist, chemist का example दिया हमने, so too the Guru Maharaj यहाँ Ramji says, how much our solid, real, tangible, experiential the world appears to be, but still it is Maya eva. Now how many years we have to study Upanishads in this way that we'll be able to intellectually apprehend and accept this before getting convinced through contemplation. Then go to the meditation and realization. Bhratar yadidam vishwam paridrushyate sarvam. What it is? Maya eva. Therefore, chetasa parihratya. Chetasa means with this knowledge inside and from the within the heart, you just give up this world. It's all Maya karke. What is the meaning of giving it up from the heart? Devaluing it. Non-entertainment of it. It is not a subject of our thinking or contemplation or the goal or pursuing. That's called as Chetasa Pariharatya. Like कोई बंदा आपको धोखा दे रहे तो you understand in the intellect इसका रहने से पैसे सब नुकसान हो रहा है so slowly you remove him from the mind.
Chetasa parihritya. You feel so happy when that fellow is gone. Suddenly one day he sees, अरे ये क्यों फिर से दिखाई दे रहा है? Because you understood he's only a cheater, he's only a liability. Same way, his whole world is cheaters, liabilities, a maya. It is not allowing me to recognize my own self. Whole world, which is expression of maya. Maya you can't avoid. Effect of the maya is this world. You say reject the world, maya also goes away. Therefore, hey, my brother, this whole jagat, whichever is so solidly seen, paritushyate means which is so substantially experienced. Maya eva sarva. In this way, chetasa aparihritya. From the intellect, you throw it away. Then what to do in the mind then? Mad bhavana bhavita shuddha manasa. है ना? Mad bhavana. What is mad bhavana? My meditation. Who am I? Both nirguna and saguna, which he will tell in the next sloka. Mad bhavana bhavita shuddha manas. The one whose mind has become purified. And what is the purer than the purest of the mind? No mind. Just consciousness. Therefore, mad bhavana bhavita. In that, if it is a bhakti bhavana, you take the 12th chapter. Mayeva mana adatsva, mayi buddhim niveshaya, nivasishyasi mayeva. You will become one with me. Ata urdam na samshya. There is nothing doubt later on. There is nothing to be known later on. That's the meaning of mad bhavana bhavita shuddha manas. In the jnana marga, the pure consciousness is contemplated. In the heat of contemplation, the instrument of contemplation, the intellect or the mana also gets melted in the realization of the conscious self being us. That is called Shuddha Manas. Shuddha Manas is no Manas, zero. Purified mind is no mind. And what is the impurity of the mind? Thoughts, the vasana samskaras. Therefore, the need of Ashtanga Yoga study and sadhana. Bhakti also helps that. Vedanta to anyway help karega, but we can't have guts to. Like a huge maze, Gada. You can hit one with that to the enemy, he will die. There's no doubt. But you can't lift that. Only Bhima and only Anjaneya can lift. है कि नहीं? उतने बड़ा इंस्ट्रूमेंट से मार सकते हैं, लेकिन हम उठा नहीं सकते. So the Vedanta marga tak फटाफट होता विहंग वीक्षण है, विहंग मार्ग. But you have to have that type of वैराग्य, that is सूक्ष्मता and all. तो वो भी थोड़ा हेल्प करेगा. तो थोड़ा भक्ति भी हेल्प करेगा, बट ज्यादा हेल्प करता है कर्म योगा और योग दर्शनम फॉर दिस मानस का शुद्धि को पाने के लिए. In the Vedanta, Shuddha Manas means there is no mana, everything is pure consciousness. In Bhakti, the mana is arpita to the Lord through all devotions, therefore all impurities gone. In the Yoga, by removing the samskaras, the vritti is also removed. The samskara removal, vritti removal is called the asamprajnata yoga. Then just viveka khyati, then paravairagya, then establishing in the self. That's it. Because there's nothing for the self to identify with. Because in that Utambara Prajna, all these vrittis, karana of the vritti, the samskara, they're all burnt and totally eliminated. Actually, one can see. Remember, every Adhyatmic sadhana, one can visualize before doing sadhana, one can visualize while the sadhana is happening, and one can visualize the experience of it. Like when you are in helicopter, you can visualize how it takes off. And as it's going higher and higher, you can visualize the earth is becoming distant. You can visualize its travel to various places. You can see it landing also. So, to all the Adhyatmic sadhanas can be visualized through intellectual understanding, can be visualized while practicing. You can really experience those experiences direct. One of them is Shuddha Manasa. So, Mad Bhavana Bhavita Shuddha Manasa. Now, ye wala ek line in Bhagavad during our 11th Skanda study of 15th, 16th chapter, how many times Lord Krishna said, didn't we spend 60 days to study that particular chapter of Upasana, Bhajana, Kirtana, Satsanga, Mandira Nirmana, doing Bhagwan's pujas in big way, then Unka Saguna, Dhyanam, Nama Sankirtanam. How many topics have been discussed that time? Mad Bhavana Bhavita. And the result was Shuddha Manas. Bhagavan again and again said, if you meditate on me, remember me and all, whatever the samskaras that are in your heart, they'll be burned. Those were the very delightful days when we were engrossingly studying that particular 11th skanda for 500 days. भगवान प्रसन्न हो जाए, जो मेहनत आप ही करवाए हमसे, थोड़ा विवेक वैराग्य दो, खींचो हमको इस संसार से, लक्ष्य
लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम, ये हाथ लेकर खींचो, प्लीज पुट मी इन दैट स्पिरिचुअल, आई एम नॉट एबल टू डू। मांगना चाहिए, ले लो अब, ये जो भी साधना सत्संग या एवरी पुण्य यू टेक इट, बट मेक मी प्रैक्टिकली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन ऑफ द रियलिटी। ओ कर तो रहे सब कुछ उसी के लिए। सो भ्रातर यदि इदम परिदृश्यते जगत मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा मद्भावना भावित शुद्धमा, being so you will get the result, and I am blessing you for that. What is that? Beautiful, sukhi bhava. So therefore in the drishya jagat there is only dukkha, but when you discover your identity with me, sukhi bhava. So to anandamayo bhava, be at the bliss level. In the world there are only blisters, burns. In the Brahma Anubhuti, Anandamaya. Sukhi Bhava is Bhakti Bhava mein. Ananda is Jnana Bhava mein. Aise, for the sake of understanding. Third one, Niramaya Bhava. So in the samsara, only the Manasika Roga, Sharirika Roga, Vyavaharika Roga. But once you discover the self, there is no disease causing ignorance, and ignorance created delusions at all. सो सुखी भव, आनंदमयो भव, निरामयो भव, भगवान आत्म भव, सुखी भव, सुखी भव, आनंदी भव, संतानवान भव, धनवान भव, गुणवान भव, जनवान भव, ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना भगवान, कहते हैं सुखी भव, आनंदमय भव, हाँ, देन निरामयो भव। प्लीज लक्ष्मण, आई हैव डन द बेस्ट फ्रॉम माय साइड ऑफ गिविंग यू द सार ऑफ ऑल द श्रुति एट वन प्लेस। More than that, what can I do? Only one thing has to be done. You have to do the sadhana. Sadhana has to be done that you alone can do. वो भी मैंने बता दी। भ्राता, यू नो, प्रियः कहा, भ्राता कहा, अरे मेरे प्यारे, मेरे भैया, थोड़ा कर ले। सौम्य, सौम्य, द वर्ड यूज्ड इन उपनिषद्स, सौम्य सौम्य, प्रिय दर्शन। गीता में सखा, इष्टोसि मे दृढ़मिति, everywhere, you know, the very salient last finishing touches have to be given na, the gurus become so kind, loving, say बेटा तुम्हारा यहाँ बाल में कोट में है रे बॉल बाबा, अब तुम उसको संभालो। Like when the boxer or wrestler goes into the rings, तो कोच बेटा जीतेगा तू, है हम सब हमारे तुम्हारे साथ, है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री जाके क्रिकेटर्स को, हम आज भी है हमारे साथ, हमेशा रहेंगे आपके साथ, हम आज भी है हमेशा रहेंगे। You know, that gave good हौसला to them. All पाकिस्तान वाले all हैरान, क्या है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, एवरीवेयर ही इज देयर। ही कॉल्स द उत्तराखंड गवर्नमेंट से, बोलो उनको हमारे साथ में। बट जाना चाहिए था कोई, गडकरी विडकरी, somebody should go, even this person, राजनाथ हो गया, नहीं तो एचएम, एचएम चाहिए, डिफेंस नहीं, जे थोड़ा 2 मिनट जाकर, बस इलेक्शन में बिजी है बेचारे, आज हैदराबाद में बोल रहे थे। ओहो, व्हाट दैट हौसला हिम्मत देना आई एम टॉकिंग, you know, that blessings that are given in Mundaka Upanishad also, that guru says to the disciples, now you see that joy, याद है आपको मुंडक उपनिषद में, जो शिष्यों को, अच्छे सच्चे प्यारे शिष्यों को गुरु ने लास्ट में जो आशीर्वाद देते हैं ना, हाँ, in that in that one of the तेरे में भी आया वो, वो जो है वो बूढ़े हो गए ना, सारे चीजें याद आते नहीं आजकल। They just bless, okay? What is said in the Vedas and all come to your understanding and your experience. In that way, they bless. All the gurus are like that. सयो वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, है ना? तरति शोकं तरति पापमानं वह ग्रंथिभ्यः विमुक्तः अमृतः भवन्ति, you know, all this तुरंत नहीं मिल रहा मुझे।
कल बताएंगे उसमें. So here also Sukhi Bhava, Anandamayo Bhava, Niramayo Bhava. देखो डॉक्टर्स गिव मेडिसिन, दे ब्लेस, बट मेडिकेशन टेक टू बी टेकन बाय अस, नो. तो राम जी कह रहे भैया दो ही बात है, सार अंश ऑफ द होल थिंग. All the world solidly you are involved in is solidly untrue, it is Maya. So from the chitta, the value, the importance given to us, just throw it away. In the same chitta, just meditate on me. Mad bhavana bhavita shuddha manasa. लिख लो, मद भावा भावित शुद्ध मानस, राम भावना भावित शुद्ध मानस, कृष्ण भावना भावित शुद्ध मानस, आत्म भावना भावित शुद्ध मानस, सुखी भव आनंदमय निरामय. Then what is mad bhavana? Meditation on me, the saguna and nirguna. That he will tell in the next sloka. Then again he says vijnanam etad akilam shruti saram ityadi. Just hold on to it. Reach to me. So tomorrow also I think one श्लोका, परसों 50वां दिन हम इसको संपन्न करेंगे, पूरा पारायण करेंगे. इस तरह से सोचे. देन हो गया तो वंस इट इज ओवर, आगे बाकी सब स्टोरी ही है. अब उसमें क्या है, we can go fast. I just want to stay with Rama and Lakshmana and Rama Gita for just a few moments. Like as I quoted just now, 11th Skanda, where are we going back to it? 10th Skanda, what a beautiful Krishna Leelas were there. Time तो घूम भाग ही रहा है टाइम. ऑलरेडी वी आर 10th स्कंद होकर कितने दिन हो गए, ऑलरेडी 15-20 दिन हो गए. So let us revel in it for some time. Okay, tomorrow only I feel like doing it, even day after. एक श्लोक का पूरा सार ग्रहण. थैंक यू. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. ओम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. ओम भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्तके की गना रोग भरतदम भोलेर मृत्युदार कुटारी गाय नमो नमः. ओम नासै रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. ओम श्री हनुमत वीराय ओम श्री हनुमत वीराय ओम श्री हनुमत वीराय ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. शिवस्मरण. ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम राम 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 राम
Rama 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 Rama. 900 to 1000 हनुमान सहस्रनामावली कंक्लूड करेंगे. 899 से आई एम डूइंग. ओम अनंताय नमः. ओम अनंतमंगलाय नमः. ओम अष्टमूर्तिधराय नमः. ओम नेत्रे नमः. ओम विरूपाय नमः. ओम स्वरसुंदराय नमः. ओम धूमकेतवे नमः. ओम महाकेतवे नमः. ओम सत्यकेतवे नमः. ओम महारथाय नमः. ओम नंदिने नमः. ओम प्रियाय नमः. ओम स्वतंत्राय नमः. ओम मेखलिने नमः. ओम डमरुप्रियाय नमः. ओम लोहितांगाय नमः. ओम समिधे नमः. ओम वह्नये नमः. ओम षड्ऋतवे नमः. ओम शर्वाय नमः. ओम ईश्वराय नमः. ओम फलभुजे नमः. ओम फलहस्ताय नमः. ओम सर्वकर्मफलप्रदाय नमः. ओम धर्माध्यक्षाय नमः. ओम धर्मफलाय नमः. ओम धर्माय नमः. ओम धर्मप्रदाय नमः. ओम अर्थदाय नमः. ओम पंचविंशतितत्त्वज्ञाय नमः. ओम तारकाय नमः. ओम ब्रह्मतत्पराय नमः. ओम त्रिमार्गवसतये नमः. ओम भीमाय नमः. ओम सर्वदुष्टनिबर्हणाय नमः. ओम ऊर्जः स्वामिने नमः. ओम जलस्वामिने नमः. ओम शूलिने नमः. ओम मालिने नमः. ओम निशाकराय नमः. ओम रक्तांबरधराय नमः. ओम रक्ताय नमः. ओम रक्तमाल्यविभूषणाय नमः. अम्मा. ओम वनमालिने नमः. ओम शुभांगाय नमः. ओम श्वेताय नमः. ओम श्वेतांबराय नमः. ओम युवाय नमः. ओम जयाय नमः. ओम अजेय परिवाराय नमः. ओम सहस्रवदनाय नमः. ओम कवये नमः. ओम शाकिनी डाकिनी यक्षरक्षोभूत प्रभंजनाय नमः. ओम सद्योजाताय नमः. ओम कामगतये नमः. ओम ज्ञानमूर्तये नमः. ओम यशस्कराय नमः. ओम शंभुतेजसे नमः. ओम सार्वभौमाय नमः. ओम विष्णुभक्ताय नमः. ओम प्लवंगमाय नमः. ओम चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः. ओम पौलस्त्यबलदर्पग्ने नमः. ओम सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः. ओम श्रीमते नमः. ओम अंगदप्रियवर्धनाय नमः. ओम स्मृतिबीजाय नमः. ओम सुरेशानाय नमः. ओम संसारवयनाशनाय नमः. ओम उत्तमाय नमः. ओम श्री परिवाराय नमः. ओम श्री भुवे नमः. ओम उग्राय नमः. ओम कामदुहे नमः. ओम सदागतये नमः. ओम आतरिश्वने नमः. ओम रामपादाब्ज षट्पदाय नमः. ओम नीलप्रियाय नमः. ओम नीलवर्णाय नमः. ओम नीलवर्णप्रियाय नमः. ओम सुहृदे नमः. ओम रामदूताय नमः. ओम लोकबंधवे नमः. ओम अंतरात्मने नमः. ओम मनोरमाय नमः. ओम श्रीरामध्यानकृते नमः. ओम वीराय नमः. ओम सदा किं पुरुषस्तुताय नमः. ओम रामकार्यान्तरंगाय नमः. ओम शुद्धये नमः. ओम गत्यै नमः. ओम अनामयाय नमः. ओम पुण्यश्लोकाय नमः. ओम परानंदाय नमः. ओम परेशप्रियसारथये नमः. ओम लोकस्वामिने नमः. ओम मुक्तिदात्रे नमः. ओम सर्वकारणकारणाय नमः. ओम महाबलाय नमः. ओम महावीराय नमः. ओम पारावारगतये नमः. ओम गुरवे नमः. ओम तारकाय नमः. ओम भगवते नमः. ओम त्रात्रे नमः. ओम स्वस्तिदात्रे नमः. ओम सुमंगलाय नमः. ओम समस्तलोकसाक्षिणे नमः. ओम समस्तसुरवन्दिताय नमः. ओम श्री सीता समेत श्रीरामपाद सेवा धुरंधराय नमः. ओम श्री सीता समेत श्रीरामपाद सेवा धुरंधराय नमः. ओम श्री सीता समेत श्रीरामपाद सेवा धुरंधराय नमः. ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते नमः. Friends, it was a fantastic effort for us ways of doing these Sahasranamavalis. Really, it was delightful that you are all there to take part. In this way, we have done Kakaradi Kali Sahasranamavali, we have done Dattatreya Sahasranamavali, we have done Durga Sahasranamavali, Kamala Sahasranamavali, Bala Trivara Sundari Nama Sahasranamavali, again Bala Sahasranamavali, now it is Hanuman. Now, in the sequence, next one here is Sri Rama Sahasranama. Good. Tomorrow, see.
The Rama Gita will conclude and Rama Sahasranamavali karte jayenge. Then our what it is, Adhyatma Ramayana, we have only 6, 7, 8, 9, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 4 sargas only are there. That's it, na? Nahi nahi hai isme. Ha. So in the 10 days of daily 100 names, if we can do this, then we have Sita Sahasranamavali also. Nahi hua, to wo bhi karenge. But it's a very good coincidence. So Sri Ram Sahasranamavali from same whatever site or thing link आप डाउनलोड करके रखना. मैं तो कर लिया हूँ ऑलरेडी. Thank you. Now the most delightful, enchanting, great thing which we started yesterday of chanting the Rubhu Gita. First chapter we saw yesterday. Let us do the second one. Just Parayan karo. Keep your mind while doing so. If not 100, at least 1% we may understand. Even if not understood, just keep the chanting. That itself gives the punya ityadi. Okay. So first chapter is over. Second one. Om Atha Shivarahasyam Rubhu Gita Atha Dvitiyodhyayah Ishvaraha Om Shrunu Padmaja Sambhuta Mattah Sutra Vidhikramam Jnanotpadaka Hetuni Shruti Sarani Tattvataha Vyasa Manvantareshu Pratiyuga Janitaha शाम्भवज्ञानसिद्ध्यै भस्माभ्यक्तसमस्तगात्र निवहा रुद्राक्षमालाधराः कैलासं समवाप्य शङ्करपद ध्यानेन सूत्राण्युमा कान्तात् प्राप्य वितन्वते स्वकधिया प्रामाण्यवादानहो जिज्ञास्यं ब्रह्म एवेत्यतपदविदितैः साधन प्राप्त्युपायैः योगैर्योगाद्युपायैः यमनियममः साङ्ख्यवेदान्तवाक्यैः श्रोतव्यो भगवान् न रूपगुणतः मन्तव्य इत्याह हि वेदोद्बोधदवाक्यहेतुकरणैर्ध्येयः स साक्षात्कृतेः जन्माद्यस्य यतोऽस्य चित्रजगतः मिथ्यैव तत्कारणं ब्रह्म ब्रह्मात्मनैव प्रकृतिपरमदः वर्तमानं विवर्तेत श्रुत्या युक्त्या यतो वा इति पदघटितो बोधतो वक्ति शम्भुं नानु कालविपाककर्मजनितेत्याचोदना वै मृषा योनिः शास्त्रस्य वेदस्तदुभयमननात् योनिः शास्त्रस्य वेदः तदुभयमननात् ब्रह्मणः प्रत्यभिज्ञा निःश्वासा द्वेदजालं शिववरवदनात् वेदसा प्राप्तमेतत् तस्मात् तर्कवितर्क कर्कशधिया नातिक्रमेत् तां धियं स्वाम्नाय क्रियया तदप्रकरणे योनिर्महेशो ध्रुवं तत्त्वस्यापि समन्वयात् श्रुतिगिरां विश्वेश्वरे चोदना सा चानिर्वचनीयतामुपगता वाचो निवृत्ता इति आत्मैवैष इतीव वाक्यसुवृतिर्वृत्तिं विधत्ते धिया वेदान्तादिषु एक एव भगवान् उक्तो महेशो ध्रुवं नासद्वा वीक्षते यज्जडमिति करणैः गन्धरूपादहीनं शब्दस्पर्शादिहीनं जगदनुगतमपि तद्ब्रह्म किं रूपमीष्टे गौणं चेदपि शब्दतो जगदिदं यन्नामरूपात्मकम् उत्तच्छात्राविशदीश्वरोऽर्थवचसा मोक्षस्य निष्ठाक्रमः हेयत्वावचनाच्चतश्रुतिगिरां स्थूलं प्रदृष्टं भवेत् रूपं नारूपतपि प्रकरणवचनं वा विकारः किलेदं स्वाप्यायादपि तद्वदापि परमा नन्दो यदीत्थं परः सामान्याच्च गतेरथाप्यनुभवे विद्योतते शङ्करः सुतत्वाद्वेदान्त प्रतिपदवचः कारणममा
सनातो नाथानां स च किल न कश्चिज्जनिभवः स एवानन्दात्मा श्रुतिकथितकोशातिरहितः विकारप्राचुर्यात् न हि भवति कार्यं च करणं तद्धेतुव्यपदेशतोऽपि शिव एवेति चानन्दकृत् तद्धेतुव्यपदेशतोऽपि शिव एवेति चानन्दकृत् मन्त्रैर्वर्णकृतक्रमेण भगवान् सत्याद्यसन्नत्योच्यते नैरन्तर्यानुपपत्तितोऽपि सुखिता चानन्दभेदोऽर्थतः कामाच्चाननुभावतो हृदि विदा जायेद्वयं संसृतेः पुच्छं ब्रह्म प्रतिष्ठितेति वचनात् शेषी महेशो व्ययः आकाशान्तरतोऽपि भौतिकहृदा काशात्मता वाक्यतः ब्रह्मैव प्रतिभाति भेदकलने च अकल्पना कल्पतः सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्वा न हि खलु न भेदः परशिवे सुषुप्त्युत्क्रान्तो सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्वा न हि खलु न भेदः परशिवे अतोत्थानं द्वैते न भवति परे वै विलयने तदरं यत् सूक्ष्मं जगदिदम् अनाकारमरसं सगन्धां न स्पर्शं भवति परमेशे विलसितम् अधीनं चार्थं तद्भवति पुनरेवेक्षणं परं स्वतन्त्रेच्छा शम्भोर्न खलु करणं कार्यमपि न ज्ञेयत्वावचनाच्च शङ्करपरानन्दे प्रमोदास्पदे प्रज्ञानं न हि कारणं प्रकृतिकं प्रश्नत्रयस्यार्थवत् न विज्ञेयं देहप्रविलय शतोत्थाननगणना समृत्योर्मृत्युः तद्भवति किल भेदेन जगतः महद्वच्छाणीयो भवति च समो लोकसुदृशा तथा ज्योतिस्त्वेकं प्रकरणपरं कल्पितवतः न संख्याभेदेन त्रिभुवनविभवादतिकरं स्वभावोऽयं शश्वत मुखरयति मोदाय जगतां प्राणादुद्गतपञ्चसङ्ख्यजनिता तद्वत् स्त्रिवच्च श्रुतं तच्छ्रोत्रं मनसो न सिद्धपरमा नन्दैकजन्यं महः ज्योतिष्कारणदर्शिते च करणे सत्ता सदित्यन्वहं चाकर्षा भवति प्रकर्षजनिते त्वत्तीति वाक्योत्तरं जाग्रत्वावचनेन जीवजगतोर्भेदः कथं कथ्यते लिङ्गं प्राणगतं न चेश्वरपरं ज्योतिः किलैक्यप्रदम् अन्यार्थत्वविवेकतोऽर्थगतिकं चाकल्पयद्वाक्यतः वाक्यतः प्रज्ञामित्यपरः क्रमस्थितिरसावन्यो वदन्तं मृषा प्रकृत्यैवं सिद्धं भवति परमानन्दविधुरम् अभिद्योपादेशात् भवति उभयाम्नाय वचनैः भवत्यात्मा कर्ता कृतिविरहितो यो निरपि च प्रतिष्ठा निष्ठा च त्रिभुवनगुरुः प्रेम सदनः अभिद्योपादेशात् स बहुभवदीक्षादिवशतः समासाचोभाभ्यां प्रकृतिज समाम्नाय वचनात् अतो ह्यात्मा शुद्धः प्रकृतिपरिणामेन जगतां हृदीव व्यापारो भवति परिणामेषु च शिवः आनन्दाभ्यासयोगात् विकृतजगदानन्दजगतः अतो हेतोर्धर्मो न भवति शिवः कारणपरः हिरण्यात्मा आदित्ये क्षिणि उदेतिह भगवान् ततेश्चाधाराणां श्रवणवचनैर्गोपितधियः. Friends, I am remembering every of the Upanishad when I am chanting these mantras. Essence of all Upanishads have come. Today in the chanting, Taittiriya came, Aitareya came, Mandukya came, Katha came also. All of that Saramsha was coming, even Mundaka. So it has got 97 mantras, this chapter 2. So it can't be done in one day, at least 3 more days. So tomorrow, today we did 20, tomorrow after 50, 60 we do, then one more day. Thank you. Om Bhurvasvahasan Pranaya Panavyana Udana Samanaya Brahmane Brahmarpana Brahmavir Brahmagnu Madhya Madhya Hastavada Prakshana Achamana Tambula Nirajanam Darshayami Om. Hmm.
ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं नारायणाय विद्महे नमो ब्रह्मणां ब्रह्मलोकदेवस्य बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय। श्री रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र योग वासिष्ठ पातंजलि योग दर्शन अध्यात्म रामायण सूत संविदा शिवपुराण समस्त नाथन वैदिक संस्कृति श्रुति स्मृतिदास शास्त्र की जय श्री वेदव्यास देव सूतादि भागवताचार्य हरि की जय श्री वेदव्यास वाल्मीकिमित्र तुलसीदास रामायणाचार्य की जय श्री वेदव्यास याज्ञवल के आद्य शंकराचार्य ब्रह्मविद्याचार्य की जय हिरण्यगर्भ कपिल व्यास आदि योग दर्शनाचार्य की जय मनो भाई सब संदन की जय सद्गुरुनाथ महाराज की आज की आनंद की जय नमः पार्वती मध्य हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंदा गोविंद जानकी जीवन स्मृति राम राम अम्बे में आज माता की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय आंजनेय धरावत हनुमान प्रचोदयात् बोलो श्री सांब सदा शिव भगवान की जय समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञासु धर्म संस्थापक गण की जय भारत माता की जय सनातन धर्म की जय वैदिक हिंदव संस्कृत की जय अध्यात्मिक जीवन विधान की जय टुडे हनुमान सहस्रनाम is over. Tomorrow onwards Rama and also RUBHU Gita is so fantastic, very enlightening, very delighting. Thank God, instead of myself doing selfishly the Parayanam, I am doing it in the class so that at least few more are there to listen to it. May Bhagavan give us all the yukti, bhakti, mukti, shakti to be able to do this adhyatmic sadhanas fully, thoroughly. See you tomorrow. Om.